टर्मिनेटिंग डेसिमल माने once you divide, तो डेसिमल पॉइंट पर you get a finite number of digits. For example मु कहबी 4/2 किंबा 1/2. 4/2 केते तमरो? Yes, 2. जदि मु डेसिमल रखली तब 2.0 रखिले, it is not wrong, it is the same thing. 1/2 को हमें कौन लिखिबा? जो डिवाइड करिबा it becomes 0.5. ओके, सपोज मु कहबी 1/5 केते हबो? 0.2. 1/5 केते? 0.2. Clear? So all these fractions when divided they end, यानी decimal परे the number of digits are finite. Okay, the number of digits are finite. So that is why these are called terminating decimal. Terminate मतलब ending. Terminating decimal. Second scenario. Second scenario is non-terminating decimal. So non-terminating means that does not end. Okay. Again, this further can be divided into two parts. Non-terminating decimal can be divided into two parts. One is non-terminating repeating decimal. Hold on. Non-terminating, अरे मेरा handwriting समझ लेना. Non-terminating decimal. The other one is non-terminating non-repeating. नहीं. Non-terminating repeating decimal, non-terminating non-repeating decimal. So instead of repeating, I can write another word, recurring. Clear? Repeating, recurring. Okay. So a digit या set of digits repeat itself. That is called repeating. Out is non-repeating. I'll take an example here. देखा उसको एडा? Let's say the decimal becomes like this. Non-terminating है. जिसका मतलब it does not end. It goes on repeating. For example, 1/3. This becomes 0.33333 like this. 1/7 is also. So 0.33 no 1/7 we'll have to see. यहाँ पे देखो non-terminating. This does not end. This does not terminate. तामाने non-terminating is correct. Repeating, recurring. Does the number 3 keep on repeating? Repeating हो नहीं 3 बार repeat हो जी. Repeating. So this is called non-terminating repeating or recurring decimal. Now such kind of numbers you can write it like this in short form. 0.33 के ऊपर बार. Got it? This means the digit 3 keeps on repeating. You need not rewrite the 3 again after decimal. Just number 3 keep on repeating. Clear? Okay. Now coming non-terminating non-recurring decimal. यानी वो खत्म ही नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है. इसका मतलब some numbers can happen like this. I don't remember the fraction जो कि ऐसा नंबर देता है, but ultimately नंबर तुम्हारा ऐसा होना चाहिए. Let's say 7.312476 something random. So it is, see, after decimal there is no pattern. None of the digit or set of digits repeat itself. So this is non-terminating, yani this is not ending, this is never ending. Also it is not non-repeating, non-recurring. मतलब गोटे digit किंबा set of digit is not repeating itself. One more example I forgot to give you in this thing. It can also become, I mean you can get a single digit repeating or a set of digit repeating. Let's say your answer can become like this, 3 4 3 4 3 4 like this. Yani 2 digit repeat itself. So you can write
the number in this form 0.34 34 ऊपर गोटे बार इसका मतलब the bar signifies that the digits the twin digits 34 and 34 sorry the twin digits 34 repeat itself single digit no dita digit so in mathematics many a times you'll come across jaldi jaldi cycle aslo ବାପା ଆସିଲେ ଆଉ ତମେ ଝାଳ ଝାଳ କାହିଁ ହେଇଛ ଓକେ ଓକେ ए क्लास छिड़ा ही मो आगे गप सेटल ओके so people focus here let us name this as 2.1 and this as 2.2 so 2.1 non terminating repeating decimal either a single digit or multiple digits 2 or 3 digit can also repeat itself बुझी पालो तो 343434 okay but in the second case that is non terminating non recurring decimal none of the digit repeat itself and there is no short way of writing the thing so this 2.2 is called irrational numbers got it non terminating non recurring decimals are irrational numbers got it that's all तो got an understanding कि irrational number कहा को कहा जाए कहा को कहते ହେଲା ବିବେକ ହଁ ବିଶାଖା କୁହ ଜୋରେ କୁହ ନା 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 non terminating non recurring ଏଟା ଡିଟୋ ମାର୍କ ମାରଛି ବା ମାନେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲେଖିଲିନି ଡିଟୋ ମାର୍କ non terminating ବୁଝି ପାରିଲ non terminating non recurring decimals okay let me write it down non terminating and non repeating or recurring okay Vishaka clear somebody messaged me hold on हाँ जी काव्य okay so now got an understanding कि irrational number का कुआ जाए irrational number का कुआ जाए what all type of number system exists okay so shall we go next Nivedevi everybody done any doubts no doubts okay Nivedevi okay जो भी डाउट है कभी भी डाउट है पूछ लो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ ऑनलाइन क्लास में तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर स्लीपिंग ओके नाउ नंबर सिस्टम में you know what is rational number a number that can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 rational number को मैं shortly mathematics में z represent करूँ okay तो z माने a number p by q form where p and q are integers and q not equal to 0 clear that is rational number you already have studied 2 chapters on it one in 8 and one in 9 okay now but one more thing whenever root 2 root 3 root 5 root 7 such kind of thing whose answer I mean in numbers ka can you see these are prime numbers so root over of a prime number is not a whole number this is a composite number prime composite मालूम है ना क्या है HCF वगैरह so we know root over of 4 is 2 actually it is plus minus 2 but for your standard let us say it is only 2 so root over of a prime number is not a whole number or natural number okay it is irrational number root over of a prime number is irrational number write it down
स्टार मार देके लिखो रूट ओवर ऑफ अ प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर. इरेशनल माने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. गॉट इट. वो नंबर जब वो डेसिमल को यानी रूट ओवर 3 जब तुम निकालोगे हमेशा डेसिमल जब रूट 2 रूट 3 निकालते हैं वी डू सम लॉन्ग डिवीजन मेथड राइट. सो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो भी आंसर निकलेगा तुम्हारा डेसिमल में that does not end, non terminating, that does not terminate and non repeating. Okay, so whenever in a fraction, whenever in a fraction if your denominator has an irrational number we try to rationalize it. लिखो, write down next point. Write down next point. A decimal, sorry, a fraction with its denominator, a fraction with its denominator a fraction with its denominator being being an irrational number, being an irrational number is always rationalized, is always rationalized. ओके इसका मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, rationalize the following, rationalize the following. One very easy questions. 1 by root 3, number 2 root 2 by root 3, number 3 1 by root 4. Rationalize the following. See, in the first case, I will multiply root 3 in the numerator and root 3 in the denominator. Does the number change? Change हो ना, ऊपर जहाँ multiply कली तोड़े से multiply कली. So this becomes root 3 by 3. So इसका मतलब है we have rationalized the number. यानी the denominator को हमें केबे irrational छाड़ू ना. Converting the complete number is difficult, but at least the denominator is always rationalized. That is a rule you have to follow. Similarly, in this case, see, numerator root 2 अच्छी, denominator रे root 3 अच्छी. So we need to rationalize the denominator. Your focus is the denominator. हमेशा denominator रे irrational number रही बनी. So in order to remove that, shall I multiply root 3 in denominator? Root 3 अच्छी ना, तो root 3 multiply कली. So जदि root 3 denominator में multiply कली, I should do the same in the numerator. Otherwise the number will change. So this becomes root 6 by 3. And this एटा केते हबो root 4 by 4, root 4 by 4, 1 by 2. Yes, very good. किए कहला some pretty good. अरे this is not irrational. Root 4 is rational, right? 4 is a composite number. So root 4 by 4 भी जदि तुम लिखिबो, then ultimately it is 2 by 4 यानी 1 by 2 ना. बस. Got it? लिविबा? Okay. There are certain rules to rationalize. Okay. Suppose if your fraction is in this form, a by b plus root c. Okay. So in order to ऊपर में लिख दो rules for rationalization. Rules for rationalization. Either plus sign हो सकता है, नहीं तो minus sign हो सकता है. So in order to rationalize, you have to do this thing. Everybody look here.
तले क्वेश्चन जहाँ थिला मु सिया लिखि देइछि। नाउ मैं क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो, और अगर माइनस है तो उसको प्लस कर दो। यानी अगर b प्लस रूट सी है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई b माइनस रूट सी। अगर माइनस अच्छी देन तुमको प्लस मल्टीप्लाई करिया पड़े, कंजुगेट मल्टीप्लाई करिया पड़िबो। And just to make sure that the number does not change, you will have to multiply the same in the numerator. Next, a plus root b by c plus root d. Let's say ये प्लस माइनस अच्छी देखो दीदीटा साइन देइछि सो दैट आई डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला बोथ ट्वाइस। प्लस अच्छी माने in one case it is plus, in one case it is minus. So this becomes जहाँ क्वेश्चन थिला write down the question. With that you will have to multiply something, right? c minus plus root d minus plus root d, but numerator है जहाँ अच्छी। ओके पीपल सी, न्यूमरेटर में भी रूट ओवर का साइन है। न्यूमरेटर ऑल्सो कैरीज रूट ओवर साइन, बट डोंट केयर अबाउट दैट, डोंट लुक हियर, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जहाँ अच्छी फोकस ऑन द डिनोमिनेटर ओनली। नेक्स्ट a प्लस माइनस रूट b बाय रूट c प्लस माइनस रूट d। आगो कौन करिया? hold on विवेक, let me write down the question first. हाँ go on, next root c minus plus and ऊपर same root c minus plus root d। examples करिबा clear होबो। कहला पढ़ी देले ना? ओके ओके ठीक है। अभी देखो वन मोर, a प्लस माइनस रूट b बाय प्लस माइनस रूट c प्लस माइनस रूट d। एटा कौन हबो? a plus root b minus plus root c minus plus root d। अभी को minus a plus minus plus root c माइनस प्लस रूट c minus माइनस plus root d प्लस root d रूट d। एटा कौन हबो? minus plus root c माइनस प्लस रूट d। ओके क्लियर? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कारण विवेक लुक हियर, एट किछि नाही माने सी रो साइन टा कोन अछि, तो ये प्लस जगह तो माइनस लिखि तलो कि एट किछि नाही माने बुझि पल्लो तो। सी एट इन द प्रीवियस पॉइंट द कोएफिशिएंट ऑफ रूट सी इज प्लस साइन, राइट? तो से प्लस जगह तुम तो नेगेटिव लिखी ना, देन व्हाई डिड यू चेंज द साइन ऑफ? हाँ, सो इन द डिनोमिनेटर, सी इन द डिनोमिनेटर अगर दोनों रूट ओवर है, if both the numbers are under root, okay, then select any one number and change its coefficient। यानी either change this sign or this sign। so I can write it in this way। देखो
एटा कौन थिला प्लस माइनस थिला ना सो एटा प्लस माइनस रहिबो and okay change only one coefficient at a time either this or let me write down the question once again root c plus minus root d देखो एटा में कौन कले d रो कोएफिशिएंट चेंज कले ना एटा में c रो कोएफिशिएंट चेंज करिवा तो केते हबो माइनस प्लस रूट c प्लस माइनस रूट d बाय माइनस प्लस रूट c प्लस माइनस रूट d बुझा पड़ला वैल्यू हाँ सेम आसबो कौन पई a प्लस b इंटू a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर राइट ताले b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करो गॉट इट माने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बट न्यूमरेटर आउट जिंस अछि ना तो सेउड साइन टा एडजस्ट हे जिवो किछि क्वेश्चंस नेले क्लियर हे जिवो गॉट इट नाउ लेट अस डू अ फ्यू रैशनलाइजेशन फ्रॉम योर बुक बुक दियो खोली के दियो okay people write down a few questions rationalize the following क्वेश्चन होची रैशनलाइज द फॉलोइंग जितना भी पॉसिबिलिटी है रैशनलाइजेशन का फ्रैक्शन का सब इसी में ही है ओके एवरीथिंग इज इंक्लूसिव ऑफ दिस फॉर्मूलाज क्वेश्चन दियो रैशनलाइज द फॉलोइंग बस इतना ही क्वेश्चन है बुक में एग्जांपल्स हमें कर दीजिए ऑलरेडी 1/7 minus 3 root 2 ओके पीपल डू दिस 3 क्वेश्चंस फिर आगे जाएंगे हम वेरी गुड नंबर 2 क्वेश्चन होची 1/√7 minus 2 1 whole divided by √7 minus 2 हेगला गोपाल अरे कल आउट एक्स्ट्रा क्लास जान छोटी 3 रे सब लोग आना नहीं जियोलॉजी पढ़े एकेडमिक हम तुम एकेडमिक क्लासेस मिस होता ना दीटा एकेडमिक मिस होती राइट तो सेटा कंपनसेट हो करिया दिव्यांका ऑल गुड ओके हु इज जीकेआर कि गोटे ना लिखी जीकेआर ज्ञानेश्वर जी माने ज्ञानेश्वर के माने कुमार आर माने राउत ओके पीपल एटा कौन हबो आई टोल्ड यू अगर 2 रूट है तो यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ एनी वन रूट यानी यू हैव टू मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट सो √5 प्लस √2 अच्छी सो आई कैन मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 और माइनस √5 प्लस √2 एनी वन इज द सेम थिंग कंफ्यूजन नहीं था करके देखो ना डू इट इधर वे अगर आंसर निकलता है तो इट्स द सेम सो ये देखो √5 minus √2 एबे देखो a plus b into a minus b so this becomes a square minus b square दिव्यांका 5 minus 2 होगा नहीं बस in the next step you write it as 3 √5 minus √2 by 3 see your denominator is rationalized denominator is no longer a irrational number बस that was the target never leave your answer or a decimal sorry a fraction with its denominator in irrational form always rationalize the fraction
एटा देखो कौन करिया √7 -2 अच्छी मल्टीप्लाई कौन करिवा √7 + 2 ओके करके देखते हैं √7 + 2 करके देखिए it becomes √7 + 2 a plus b minus b this becomes a square minus b square यानी √7 + 2 by 3 you can also take 2 minus √7 I mean -2 minus √7 नहीं परिवा any of the following this also you can multiply कौन 7 plus 3√2 multiply करियो ऊपर है and 7 plus 3√2 multiply करियो ऊपर है denominator टा conjugate multiply कला पर है the denominator will come in this form ठीक है recording टा बंद ही गला ठीक है पिला कोई दिए से recording convert होची and class टा नेट भी आसुनी कौन है तो स्लो हो गरम लगुच ना 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 जूम मीटिंग टा बंद हो गला यूट्यूब रे लाइव चलचे आई डोंट नो ना यूट्यूब रे पिला देखि पाना किछि पिला माने जूम रे जॉइन करचंती ऑलरेडी डिक्लेयर है कि जूम रे भी जॉइन करिवे आई एम देयर फॉर दैट पर्पस डोंट वरी योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड ah ah
ओके ହେଇଗଲା now let's start in zoom okay online people am I audible now whoever are there in zoom somebody respond okay अरे यहाँ पे सेशन एंड हो गया 40 मिनट के बाद उसको सेव करने में टाइम लगा ओके सो पीपल आर क्लियर विद दिस सम पीपल हैव मेरे को कोई क्वेश्चन भेजी है सर प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2 ओके संप्रीति this question you can do it using induction mathematical induction उसको बोलते हैं उसको हम करेंगे after getting acquainted with some more questions we'll do that question okay don't worry अन्वेषा you are back online okay ठीक ଅଛି now rationalization रे बुझी पारलो कोनटा करा होची कोटा लास्ट एटा तो एटा तो करले हमें ओके होल्ड ऑन कहला एटा कर दो तो ओके this is what we multiply either doubts nahi so this becomes 7 plus 3 root 2 now see it is again in that form a minus b whole into a plus b yani a square minus b square so 7 plus 3 root 2 denominator becomes 49 minus 3 3 ja 9 2 ja 18 thus ହେଲା विवेक बुझा पड़ला ओके लिबे देवी डाउट अच्छी अर्पित को सी a plus b whole into a minus b तामाने a square minus b square तो 7 square कहते 49 minus 3 root 2 माने कौन 3 root 2 into 3 root 2 3 3 जा 9 root 2 कहते 2 तो 9 2 जा 18 ओके सो तुमरो नंबर सिस्टम रे एबे खाली प्लॉटिंग टा बाकी रहिला जो मेजॉरिटी दिन जा रहिला प्लॉटिंग बाकी रहिला सो प्लॉटिंग रे विल गो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल in a number line if it is told this is 0 this is 1 this is 2 this is minus 1 this is minus 2 so in a number line if somebody will tell you to pinpoint or to pick or to mark a point let's say 0.5 then you know that 0.5 occurs here so this is 0.5 exactly in between 0 and 1 suppose it will tell you 0.1 tamane we know 0 to 1 the distance between 0 to 1 is equally divided into 10 parts hela एट चारटा गारो अच्छी देखो 1 2 3 4 5 5 parts here and 5 part there तो 0.1 माने the very first small division is 0.1 this is how you mark it in a number line एटा में छोटे बड़े करथले स्टैंडर्ड 7 6 रे एमती कुआ जाए स्टैंडर्ड 7 6 नो रे स्टैंडर्ड 4 5 रे 0.2 0.4 मार्क करो up to 4 6 decimal places जे थिबो then you cannot mark it exactly you'll have to see हमें करिबा सेटा okay let's say question कोई तबो 1.25 मार्क करिया को किंबा 1.33 मार्क करिया को जाय तो that is very difficult to mark it although 1.25 is bit more possible 1.25 काई possible देखो 1.25 can be written as 1 plus 0.25 okay nahi 1 plus 0.25 ता माने 1 complete division and 0.25 माने कौन 1/4 or not 1/4 टा 0.25 ना ता माने 1 complete division and उसके साथ 1/4 extra so we know that this is half ता माने एटा कौन yes so this point is 1.25
accurate approximately the pinpoint karibo tale emti karibo. Okay, accurate is possible but not like this. That we will study next. Now further ऐसा हम किए थे, I mean standard 4 5 रे जो पचार रही तो वो 1.33 टा मार्क करो, हमें approximately नहीं कि सेठी point दे गुंदरे दो ठीक है. Now mathematically if you want to measure and mark it exactly, then we will have to shift to some constructional geometry. हाँ कि डाउट पचार थलो को. हेलो. हाँ ए पार्ट नहीं एनसीईआरटी रे, बट आई एम लिंकिंग बिटवीन योर जूनियर स्टैंडर्ड्स एंड प्रेजेंट स्टैंडर्ड है. एटा एनसीईआरटी रे अच्छी बट स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी रे नहीं. स्टैंडर्ड 6 7 अच्छी, इवन स्टैंडर्ड 9 अरे हे बा 9th एनसीईआरटी रे अच्छी बा. So don't worry, just ଜିନିଷଟା ଜାଣି ଦେଇଥାଉ, it does not harm ହେଲା. ଯଦି କୋର୍ସରେ ନାହିଁ ତ ଜାଣିଦେବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ. So this is how we used to mark when we don't know the exact point. हम approximately एमती मार्क करे, माने जदि 1.25 थी हमें exactly मार्क करी पारिबा, माने approximately which is close to exact, but 1.33 टा we do not find any point. Clear? So 1.33 को भी हमें approximately मार्क कर दियो. Now in order to हाँ को 1.3 plus 0.3. Yes. कोड गोटे मार्क करतो ना, ठीक अच्छी कोड गोटे माने जेते एक्यूरेटली मार्क करि परिबो कोन. जेते बेले टेलीस्कोप नथिला तारा को आखिरे देखू, जदि टेलीस्कोप अछि त आखिरे कोन अनेबो आकाश रे. Okay, now in order to mark such kind of points, we have another way in geometry. Also, not only this point, these are all terminating and non-repeating decimal. Yani these are, sorry, in short words, these are terminating decimal. But in order to mark a irrational number, is very difficult because we don't know that that number ends or not. माने irrational number टा होची non terminating, यानी सेटा end हुए ना, it is non terminating, non repeating. So since we don't know how big the number is, how big the decimal part is, how can we mark it? So there is a way in which we can mark it, that is called geometrical constructions. केमती करिबा देखो, write down measure and mark, write down measure and mark root 2 on a number line. Question लिखो, measure and mark root 2 on a number line. Yeah, shit. एते बड़ होल अछि मु जान नथले. People give me 1 minute, मेरा हाथ पूरा गया. आज शुभ्रांशु आसले भल होइतंता हाथ देले बोल. Okay people, how to measure root 2 on a number line? So first of all, draw a number line. So number line is 0 thibo, 1 thibo, 2 thibo, -1, -2, like this it can go on both sides. Now you have to measure root 2 on a number line. So root 2 ta kemti measure kare, root 2 is non terminating, non repeating. Okay, but using Pythagoras theorem,
Using Pythagoras theorem, we can measure a irrational number on a number line. Let's say I have a right angle triangle which is ABC. If the measure of both the sides, that is base and height, is 1 and 1, so BC केते बनिबो root 2. अरे BC square is AB square plus AC square. से पाइथागोरस भूल जाइथला ओ कोरियो पिलांगो. Is it correct? Because AB square plus AC square is equal to BC square. Tamane, if I draw a right angle triangle, whose measure of both the sides are 1 unit and 1 unit, it can be 1 centimeter, 1 millimeter, kilometer, jabi. Okay, then the hypotenuse is given by root 2. Tamane, let's see. Let's say, see, whatever measurement I will do, I will start from 0, right? With the 0 ochi, origin ochi, from the origin only I will start my measurement. Let's say this is, this is definitely 1 unit. So at point 1, I will draw a 90 degree, I will draw a perpendicular. How to do a perpendicular? Using a compass, you know it. Taking this as the center, draw an arc. Then taking both the end points, mark the arc. Wherever it intersects, that is the perpendicular bisector or the 90 degree at that point. Is it 90 degree? Construction, jemti ame korthale standard 9 re. Hela. Now take a compass, take a unit measurement of 1 unit, then taking this as the center, cut it. You will get a point. Now this distance is 1 unit. Bujhipalo kemti kale ame? Okay. So now if you join the origin and the final obtained point, let's say this is O, this is A. Tamane OA is equal to root 2 units. जदि सेंटीमीटर दे तो सेंटीमीटर लिखिबो. हाँ हाँ तो डिस्प्ले हे गला माने आमे नंबर को काउंट करि परियानी, बट ज्योमेट्री आमे कर देले ना. एटा एग्जैक्ट वैल्यू आसीबो. हां सब बड़े. ओके, now see, OA distance is root 2 unit, but we have to mention it in the number line. So what you do, taking ये इनका जे भइला पूरा बहुत भरी दैछि ता भितरे कोन हला प्रेशर. Okay, so taking O as the center and OA as the radius, jodi if we draw an arc to intersect the number line, it will intersect at a point which may or may not be similar to the previous point. So that is B. So OB is also root 2 units. Zero re koribo na all. See. Ultimately you have to measure a length of root 2 units in the number line na. तो आमे जतले मेजरमेंट करू सबले आमे origin रू करू ना 0 रू. When you measure with a scale, you start from 0, right? 0 90 degree no. So a point टा मु 0 नहीं गली, ये point टा मु 1 unit नहीं गली. This is my number line. बुझी पालो. So ये जो measurement है ना, मु same arc रे एमती draw करी काटी देली. जो intersect कला, ये length जहाँ ये length से आना. So ultimately, finally I can say that this distance is root 2. Okay नहीं? बुझा पड़ला? हाँ, को. नहीं परिबो, your choice. Ultimately तमु देखियार अछि कि क्वेश्चन रे root 2 units कोइछि ना root 2 centimeter कोइछि. जदि सेंटीमीटर, you have to take centimeter. जदि unit, then it depends on you. तमे केते को गोटे unit नउचो. In a graph paper, you can take any distance as any unit. The scale is on you. Okay, similarly, next question, people, represent root 3 on a number line. So first of all, hey, नीचे करो.
So ultimately root 3 is also an irrational number jar value is 1.732 approximately. So can you represent root 3 as the hypotenuse of a right angle triangle? କୁହ ଅଙ୍କିତା। ओके रूट 3 तो ମୁଁ ବୁଝେଇ ନିଆ ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। अंकिता रूट 3 माने एबे कहूछ ना जो आगुर मु पढ़ेइथिली एबे तो मु रूट 3 पढ़ेइनी एबे संग संग क्वेश्चन देली मु आई जस्ट एक्सप्लेन रूट 2 ओके पीपल सी ना ना माइनस नहीं होबनी पाइथागोरस थ्योरम ओनली एड्स डज नॉट सब्ट्रैक्ट सी इफ आई टेक अ ट्रायंगल whose hypotenuse is root 3 units then ultimately one of the dimensions will be root 2 another will be 1 2 कहते हैं 2 रो स्क्वायर कहते हैं रूट 2 रो स्क्वायर कहते हैं 2 plus 1 3 so root 3 cannot be expressed as the hypotenuse of a right angle triangle whose both the sides are integers dita side integer hele root 3 kebe asiboni so ultimately one side has to be root 2 so in order to plot root 3 you will have to do root 2 first then एबे देखो यहाँ पे देखो इस फिगर में देखो OA is root 2 already drawn now अगर root 2 एक साइड है तो दूसरा साइड 1 यूनिट होना चाहिए so at this point if I try to draw 90 degree so that this is 90 degree and I will take 1 unit over here let's say this is C tamane AC is 1 unit so OC टा कौन this is root 3 or not कंफ्यूज हुआ आगे रूट 2 हमें ड्रॉ कर ले we got the hypotenuse as root 2 then at one end I have to see पहले मैंने ये ट्रायंगल बना दिया ये ट्रायंगल मैंने बना दिया मेरे को रूट 2 मिल गया वंस मेरे को रूट 2 मिल गया ओ ए मेरा रूट 2 है ना वंस मेरा रूट 2 मिल गया हाँ देखो ओ ए सी रिलेट दिस फिगर्स ओ ए मतलब ये साइड है ए सी मतलब 1 यूनिट है तामाने ओसी इज योर रूट 3 राइट এই ফিগারটা নিয়ে এটি বসিয়ে দিও हाँ एक्सटेंड करिवो ओ ए को तुम एक्सटेंड करिकि यू ड्रॉ 90 डिग्री व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ a perpendicular using your compass and using all the mathematical formula that you studied earlier you do the necessary things for your construction आपको टिके एक्सटेंड करिकि 90 डिग्री ड्रॉ करे पड़ियो नले होबनी हैं भाबो कैन वी डू इट so ultimately OC is root 3 ता माने listen ultimately you have to mention the length on the number line your number line is lying here so taking OC as the arc and O as the center draw an arc to intersect the number line at a point let's say C dash so OC dash is equal to OC is equal to root 3 units ହେଲା बुझा पड़ला तो थोड़ा कौन करिवो तुम बेस चेंज करी कहूछ तो या यू कैन डू इट सी इन अदर वे यू कैन डू इट ओबी देखो मेरा ओए जो है मेरा ओबी वही है ना रूट 2 यूनिट तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 यूनिट करके रूट 3 बनाओ एक ही बात है एवरीबडी गॉट इट इसको खुद एक बार करो ये क्लियर होगा इट इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड ऑन बोर्ड बट बेटर डॉन नॉट DON ओके बेटर डन बुझा पड़ला अनदर क्वेश्चन दैट कैन कम इज
Mention root 5 on a number line. Root 5 is also an irrational number. केमती मेंशन करिवा? Like 2 square plus 1 square. Yes. Root 5 can be mentioned as 2 square plus 1 square or root over, yani you have to take a right, you have to draw a right angle triangle whose hypotenuse is root 5, yani one side, one of the length will be 2, another length will be 1, such that 2 square plus 1 square is equal to root 5. तो रफ, हमेशा इस क्वेश्चन में हमेशा रफ में एक ट्रायंगल बना देना, देखना कि क्या क्या कॉम्बिनेशन से मेरा हाइपोटेन्यूज ये आ सकता है. सो दिस इज वेरी इजी. 2 यूनिट ले जाना. देखो रूट 5 कैसे मेंशन करेंगे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज अ नंबर लाइन, राइट. सो 2, 1 लेंथ विल बी 2. यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करो, टेक 1 यूनिट. ओके, दिस इज 1 यूनिट. See, this is your root 5. Now don't forget to mention it in the number line. You have to take the arc and cut in the number line, and you have to mention that this distance is root 5. Because question re pochara hitabo, mention it in the number line. I mean, sorry, on the number line. Okay, jot it down fast. Apare will take a few questions. कौन? Thanks for informing. Thanks for informing. बुक में कुछ अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं. एनसीईआरटी बुक आर.डी. शर्मा 3.5 on a number line. विशाखा मारी देवी तुमको. 3.5 on a number line is your doubt, huh? कौन अच्छी था तेरे? Oh, sorry. Root over of 3.5. ठीक है. Then good question. Okay, people, write down the question. Root over of 3.5 on a number line. So in such a case, okay, आपको लिख देवी, ठीक है ला? Okay. The root over of 3.5 can be done by, मेरे को कल कोई दिखा मतलब I think अंशिका was showing me a method. हाँ बही रही बा हे हेडिवा बही रे root over of 3.5. Write down a question. Mention root over of 3.5 on a number line. In that case, you have to follow some steps. First of all, 0 mention करिबो. Then let us take 1, 2, 3, 4. So if this is 3, do you know exactly which will be 3.5? अरे हाँ कि नहीं? So this distance will be 3.5. So we know that this distance will be 3.5. Now, যদি এটা 3.5 ହେଲା, take one more unit. यानी take one more unit. This is 3.5 length. Take one more length. यानी this will be how much? 4.5. Okay. Now 0 to 4.5. Draw an arc. How to draw an arc? We will take 1 unit from this point. Yes. Okay. Draw an arc. How to draw an arc? See, ultimately 3.5 यदि देखो, question is we have to find root 3.5. So we'll do it in this way. आगे 3.5 नबा, तापर गोटे यूनिट नबा. Total distance को हमें bisect कर जोड़ा arc draw करिया. You know how to bisect? Take the end points, you will find the midpoint. Otherwise, you know how to bisect
4.5 distance. Bisect कर दो, can bisect करियो, taking this as a center, draw this. So if you join, you will get a midpoint. Using the midpoint, draw an arc. That arc will look something like this. Okay. Now, at the position of 3.5, draw a perpendicular that will intersect at some point. Let's say P. करो करो. Question देंगे message. Okay. So ultimately, this distance that you get, this is your 3.5 units. And taking this as center, draw an arc. Draw an arc. It will intersect somewhere. Vishaka, procedure buja padla, then I will explain the logic. I have not yet explained the logic. Procedure buja padla, whenever you want to represent root over of 3.5, root over of 4.7, root over of anything, you do it this way. First of all, যদি root over of 3.5 পচারছি কিংবা 4.7 পচারছি, take a length of 3.5, mark it in the number line. Then take one more extra unit. মানে add 1. যদি 3.5 ଅଛି plus 1 কলে কেতে 4.5 mark কর. Now starting ରୁ 4.5 পর্যন্ত ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ arc draw କର. ବୁଝିଲ? ବାଇସେକ୍ଟ କରିକି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରି ମିଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆର୍କ ଡ୍ର କରିବ. ବଡ଼ ଆର୍କ ଡ୍ର କଲା ପରେ ଯୋଉ 3.5 ଥିଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ perpendicular ଡ୍ର କର. wherever that intersects the arc, that is the measurement of root over of 3.5. now how that happened, let us see. logic ଦେଖିବା ଆମେ. let's say in the question you have been asked to find root over of x. X can be any number. we have to find what is root over of x. तो बही रे भी सेम प्रोसीजर रे करा हिची, एक्सप्लेनेशन दिया जाइची. एट देखो, लेट्स से दिस इज 0 and let's say this is x, ता माने this distance is x. I will take one more extra unit. ता माने this point becomes x plus 1. ता माने the length of this unit is how much? 1 unit. The length of this unit is x unit. Now ebe I will bisect this line segment. Tamane, let's say this is A, let's say this is B. I will bisect this. Let's say this point is C. Hela. So I will bisect this AB line segment and I will find the center point. Then arc draw karibi. Ebe kon karibi mu 8 gote perpendicular draw karibi. That will intersect at some point, let's say D. Okay, let's say this is D. now ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଯଦି x ଥିଲା, what am I claiming? I am claiming that this distance, DC distance is root x. okay, ଏଟା geometrically କେମିତି କହି ପାରିବା? somebody please tell me. I am claiming that this distance is root x. how can I say that? Okay, let's say this point is P. So can I say P is midpoint of AB? हमें bisect करके बाहर कर लेना point P टा. ता माने P is the center of the arc. ए root x टा को मु काटी के एपट लिखि देबी. Simple logic, people. You understood the procedure? 2 lines. एटा दीटा की 3टा step maximum. एटा draw कलो, एटा नेलो, एटा काटिलो, जोड़ा वाला सेटा. So hardly 2-3 steps.
ହେଲା ଏବେ ଦେଖ P are a midpoint, so if I join D and P, can I say this is 90 degree and this is the hypotenuse? Vishaka, following up? Okay. ଏବେ ଦେଖ PD, ए जो PD हैला, PD होची मोर रेडियस हाँ कि नहीं, the radius of the arc. Can I say AB distance टा केते मोर x plus 1, so can I say the radius is half of that, x plus 1 by 2, so PD मोर x plus 1 by 2 हैला. Okay. Now can somebody tell me what is the distance PC? कौन होगा? PC केते हो मोर को? वन सेकंड अर्पित कौन कहलो? हाँ? अन्वेषा कौन कहलो को? AB minus OC. AB minus OC. AB minus OC. No, no, no. मु कहली PC, PC. People tell me what is PC. हाँ को? हाँ केमी दिया लगा को? PC ए डिस्टेंस टा मु कहूची. को देखो पिले माने देखो PD होची मोरो रेडियस ता माने AP भी मो रेडियस ता माने PB भी मो रेडियस तीनटा जको रेडियस ना कौन नाम मना करछि से ओके एबे देखो आई वांट टू नो द डिस्टेंस ऑफ PC राइट एटा मु जानिया को चाहूची आई वांट टू नो दिस डिस्टेंस राइट ए डिस्टेंस केते इज दिस टोटल डिस्टेंस x x रु एटा माइनस कर देले x रु एति के माइनस कर देले एति के बंचिबो तो एति के माने कोन मो रेडियस नो की ता माने x minus x plus 1 by 2 so which is equal to x minus 1 by 2 clear मोर टोटल डिस्टेंस होची x ऑलरेडी आई हैव टेकन इट तादरु रेडियस टा माइनस हला ना रेडियस केते मोटे बडो के लिखुची रेडियस होची x plus 1 by 2 I have already found it out so this is equal to how much x minus 1 by 2 ता माने इन ट्रायंगल देखो इसे ट्रायंगल टा को बडो की करूची विशाखा लुक हियर so this is x minus 1 by 2 this is x plus 1 by 2 now find this so hypotenuse square minus this square or root over Pythagoras theorem you will get it as root x oi got it केमती आसिला so that is the logic behind it okay किछि practice करिवो then the things will become easier now in the number system only one thing is left out that is some identities log exponents that I will not tell you because ताको पढ़े पढ़े वो बुढ़ा पढ़ी पढ़ी तबे बुढ़ा a to the power m whole to the power n कौन हबो a to the माडो माने माडो boy खुलुची a to the power mn a to the power m divided by a to the power n a to the power m minus n so all these identities you know okay that I did not tell you once again although academic रा आरो बैच रे कहितली but that was also not necessary so with this your number system is over जति अच्छी exercises टे practice करियो जे doubts अछि मते कहइबो okay now I have got some time left मते किछि पिला questions पचार थले
First of all, Tejaswini. Where is Tejaswini? Vishakha? Vishakha. First question होची तेजस्विनी रो तापरे होची संप्रीति रो विशाखा हेलो से सुन मो कथा ओके मीटिंग एंड हो गला हाँ को 1.3 रो क्वेश्चन नंबर 2 ओके हाँ एनसीईआरटी जे 1.3 कहीं ओके 1.3 रो क्वेश्चन नंबर 2 you know that 1 by 7 is equal to 0.142857 can you predict what the decimal expansion of this and this हाँ मल्टीप्लाई कर दियो see देखो 1 by 7 होची 0.142857 तामाने 6टा डिजिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ ओके नाउ जदि मु कहबी 2 by 7 2 by 7 माने कोन 2 into 1 by 7 राइट सो 1 by 7 जहा थिला 10 तादरे मल्टीप्लाई करिवो आ कोन ता माने इट बिकम्स देखो बाबो 1428 एमती नंबर थिबो ओके तो जदि 2 मल्टीप्लाई करबी सब संगे 2 मल्टीप्लाई होबो ना सो देखो एटा हे जिवो 0.72 जा 14 देखो आ सहित 2 मल्टीप्लाई हेले नो नंबर इज गेटिंग फॉरवर्डेड हियर एट किछ फॉरवर्ड होउची कि होउनी ता माने दिस नंबर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बाबो एट दिस 7 मल्टीप्लाई हेतंता 7 भी फॉरवर्ड हेना 9 भी फॉरवर्ड 9 पॉइंट हां 7 फॉरवर्ड होबनी 8 पर 8 और 9 11 हां जदि आसे तो 8 मल्टीप्लाई 11 के 1 8 16 17 10 के 1 2 4 5 14 28 देखो ए नंबर ता ऊपर गोटे बार रखियो बिकॉज़ इट विल रिपीट इटसेल्फ देखो गोटे कथा एठी देखो तुम क्वेश्चन देछि 1 by 7 3 by 7 4 by 7 5 by 7 6 by 7 हैला तो 6 तक पॉसिबल 7 तक भी पॉसिबल 7 by 7 is 1 only okay but 8 by 7 is not possible 9 by 7 is not possible कारण जदि देखो this digit will repeat itself जदि यही सेट ऑफ डिजिट रे 8 मल्टीप्लाई हे गला देन नंबर विल गेट कैरिड फॉरवर्ड ये नंबर चेंज हे जीवो so you cannot tell it by simple looking or short multiplication but 8 digit सहित 2 मल्टीप्लाई करतियो सेमिति 5 by 7 देइचे ता माने 5 by 7 is equal to 1 by 7 into 5 ता माने आ सहित 5 मल्टीप्लाई कर दो को दियो काई बही काई रखिछ सब पेज तो तुम बाहर पड़ जाइछ हां को show that can be expressed in the form p by q okay एबे देखो एवरीबॉडी योर बुक पेज नंबर 12 एग्जांपल 9 क्वेश्चन पचारची शो दैट 0.2353535 डॉट 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 is equal to 0.235 35 ऊपर गोटे बार अछि 70% है आ 30 वेट करे पड़ियो पिला माने सर नमस्कार सर आश्चर्य भाव मुझे मत नमस्कार कहते कि आउका कहते ओके 0.235 सी पेज नंबर 12 example 9 show that this number is equal to this much can be expressed in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 so in this case you have to take something suppose decimal pore dita digit is repeating itself so dekho tomor seti kara jaichi he has taken 35 these are repeating itself ता माने एट एग्जांपल कोन कराई 100x ले जाइछ
Okay, 100x ନେଇଯାଇଛି. So 30, either 35 is repeating or 53 is repeating, whatever you can say. ଏଇଠି ଭାବ ସେ ତମ ବହିରେ କ'ଣ କରିଛି 100x ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି, ତ ଯଦି 100 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ 23.535353. ହଁ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁନି. subtract କରିବାକୁ ପଡିବ ନା x equals to that much. So then 100x equals to 23.535. Again, that number will be. So subtract something. ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ସବଟ୍ରାକ୍ଟ ଯଦି ନ ହବ you can take 10x, x and 10x. Okay, wait, now ଏବେ କାହିଁକି 100 କରାହେଲା ମୁଁ କହୁଛି. Let me restart the meeting. ଆକୁ କ'ଣ ରେକର୍ଡ କରିବା 3 ମିନିଟ୍ ରହିଲା. ଚିନ୍ତା କର, ସେମିତି ବି ଦୁଇଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି. ତେଜସ୍ୱିନୀ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ ଗାୟବ ହେଇଗଲା. Okay, we'll do one thing. Shall we take this tomorrow? Already time off ହେଇଗଲାଣି, ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି. ସେଇଠି 100 କାହିଁ କରାହେଲା, ନମ୍ବରଟା କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, କାରଣ ସବଟ୍ରାକ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଦେଖ ତ 53 ନ ହେଲେ ଖାଲି କହିବେ. Okay, people will continue tomorrow. You know the tomorrow's timing. Bye.